हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फाइवर। जो ये वीडियो होगा इसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे फाइवर की। फाइवर वेबसाइट क्या है, इस पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं, और एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं, और एज अ फ्रीलांसर या फाइवर आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एज अ फ्रीलांस जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं टू स्टार्ट योर सर्विसेज, गिविंग योर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स इनिशियल लेवल पे, तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होने वाला है। प्लस इस वीडियो के बाद एक फाइवर की प्लेलिस्ट बनेगी जिसके अंदर फाइवर में कैसे किक बनानी है, अकाउंट कैसे बनाना है, एंड कैसे आपको रैंक करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक प्लेलिस्ट आने वाली है इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और उस प्लेलिस्ट से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है अपनी फाइवर की जॉब गेन करने में। तो लेट्स जंप टू द स्क्रीन पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। तो होपफुली अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है फाइवर वर्ड का। मीनिंग क्या है, लाइक स्टार्ट वहां से करते हैं। बेसिक मीनिंग क्या है फाइवर वर्ड का। तो इफ आई सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ फाइवर, लेट्स जंप इनटू इट। Let's search meaning of Fiverr. Meaning of Fiverr. I've already searched it. So let's scroll down, scroll down. The meaning of Fiverr is a $5 bill. So basically the concept Fiverr का जो आया था वो कि आप एक कम प्राइस में भी एक सर्विस दे सकते हैं, लाइक $5 से भी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, तो वो आप दे सकते हैं फाइवर के अंदर। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से पुल हुआ था फाइवर का। तो फाइवर डेफिनेशन इज अ $5 बिल। अब हम देखते हैं फाइवर कहाँ की वेबसाइट है। और तो फाइवर इज एन इजराइल ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर फ्रीलांस सर्विसेज। फाइवर सर्विसेज Fiverr serves to allow listing and applying for small one-off jobs or gigs online. Job listed on the platform are diverse and range from get a well-designed business card to help with HTML, JavaScript, CSS and jQuery. सो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये फाइवर का कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर फ्रीलांस सर्विसेज। इट सर्व्स टू अलाउ लिस्टिंग एंड अप्लाइंग फॉर स्मॉल स्मॉल वन ऑफ जॉब्स। तो बेसिक आइडिया इसका है कि कुछ छोटी मोटी जॉब्स जैसे कंटेंट राइट करवा दिया, या फिर बिजनेस कार्ड बना दिया, ईमेल ड्राफ्ट करवा दिया, क्विक बुक्स की अकाउंटिंग कर दी, बैंक रिकनसाइल कर दिया, मे बी एक छोटी स्मॉल वेबसाइट बना दी। तो इन स्मॉल सर्विसेज का लाइक गिव एंड टेक के लिए एक वेबसाइट बनाई गई, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पे आप अपनी सर्विसेज बाय कर सकते हैं, सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन फाइवर का आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्चुअल वेबसाइट एंड उसको हम इलेबोरेट करते हैं, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो this is the interface of website. I have already created an account and I'm logged into the account. So this is the interface of the website. This is quite good, like quite professional. काफी decent इसका interface है जो कि आपको दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे what services are you looking for today? आप क्या सर्विसेज लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप टाइप करोगे, उसके रिगार्डिंग आपको गिग्स या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे। And then if I see here, there's a notification bar, there's a message section, there's a saved section, then orders which we have received or which we were given. Switch to selling. This we would go in like shortly in the video. तो सेलिंग अभी हम देख रहे हैं बायर साइड का, यानी कि जो सर्विस लेना चाहता है उसका इंटरफेस देख रहे हैं। स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो हम वी वुड रीच टू द सेलर साइड, लाइक जो सर्विस दे रहा है। तो लेट्स सी what services that are available or on this: graphic and design, digital marketing, writing and translation, video and animation, music, audio, programming, tech, trending topics. So ये इन कैटेगरीज की सर्विसेज दे सकते हैं अपने, जो इसके अंदर अवेलेबल है। नाउ इफ यू क्लिक ऑन लाइक चेक आउट वन कैटेगरी, किस टाइप की बिजनेस में सर्विस दे सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर इन बिजनेस आर फाइनेंशियल कंसल्टिंग, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, सेल्स, customer care, business plans, virtual assistant, legal consulting, market research, business consulting. Okay, so these all services we can give in Fiverr in the business category. So explore business. If we further down, we see
what we can do, like business plans बना सकते हैं, business consulting कर सकते हैं, market research कर सकते हैं, we can give presentation, general administrative में virtual assistant, HR, ERP management, admin work, then sales and customer care. इसके अंदर हम अपना सेल्स से रिलेटेड लीड जनरेट करना, कस्टमर सर्विस देना, ये कर सकते हैं. मिसलेनियस के अंदर कोई डिजाइन करना, करियर काउंसलिंग, तो काफी सारे बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज हम दे सकते हैं. सो बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो सब कैटेगरीज है वो ये है. लेट्स चेक आउट वन मोर सेक्शन. लेट्स से ग्राफिक एंड डिजाइन. So minimalist logo design, architecture and interior design, image editing, NFT art, टी-शर्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया डिजाइन एंड ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स. तो ग्राफिक्स रिलेटेड भी काफी सारी सर्विसेज इस पे हम दे सकते हैं. तो ये तो हो गई कि हम क्या सर्विसेज इस पे अवेलेबल है. सो इफ आई जस्ट क्विकली गो हियर एंड सर्च, लेट्स से आई वांट सम सर्विसेज इन बिजनेस प्लान एंड इफ आई हिट एंटर, तो मेरे को रिजल्ट्स मिल जाएंगे बिजनेस प्लान के लिए. टोटल 7886 सर्विसेज अवेलेबल, यानी कि 7,886 gigs are available for this particular business plan services. Fiverr's choice services that people love for super work. So Fiverr ने जो हाईलाइट किया है कि क्योंकि जो उनके ऑलरेडी रिव्यूज बहुत अच्छे आ रखे हैं, उनके काफी सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इसके सबके रिव्यूज देखो 91, 141 रिव्यूज, 332 रिव्यूज. तो इनको पहले हाईलाइट किया गया, पहले रैंक किया गया, उसके बाद नीचे लोगों को रैंक किया गया. तो अब मुझे बिजनेस प्लान के सर्विसेज लेनी है, तो जस्ट आई विल क्लिक, आई विल चूज ओके दिस इज द सर्विसेज, दिस इज द प्राइस, एंड जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस. Let's say click on this person's profile and I'll see the plan. Basic plan is $25. Business plan for loan, investment, partnership, startup. And I'll read the whole gig. And then after that, I'll just continue on the service I want to take. So I would just give him an order. Or if I want to contact him, there is an option to contact him also. Contact the service provider, we can do that. But if we can directly give him an order, if we are comfortable with the gig, but we can also contact him, and he's a level 2 seller. We will discuss about level 2 seller in upcoming videos. So this is how we can take services. Now let's jump into the one more thing. Let me just search for, let's say, QuickBooks. QuickBooks is an accounting software. If I type quick, I'll see a lot of services that are already there. So I'll search for QuickBooks bookkeeping. So I'd get 3168 services. I can also filter out the services like accounting, financial consulting, service options, like which category I want, seller details like top rated seller or level 2, level 1 seller, which language the seller speaks, which country the seller live, budget. I can select the price range, like in how much time I want, and delivery time, how many days I want to get the services delivered to me, so I can filter accordingly. And then pro services, local sellers from our country, online sellers who are connected to the Fiverr right now. So if I click on this, the person who are already online, they would be filtered out. So I can do that also. So that's why it is suggested that aap Fiverr pe online zyada rahe. Now let's jump into the selling side quickly and see how that selling side look. So the selling side, I have switched to the selling side. तो इसमें आपको आपके स्टेट्स दिखते रहेंगे, then फिर आपकी यहाँ पे इनबॉक्स के मैसेज दिखते रहेंगे आपको, एंड देन देयर इज अ गिग्स बेसिकली कैसे बनानी है, उसका वीडियो अगले प्लेलिस्ट में आएगा. बट एनालिटिक्स, सो आई विल जस्ट शो यू द एनालिटिक्स ऑफ माय गिग्स. इफ आई क्लिक ऑन एनालिटिक्स, okay, overview. So analytics show how much I have made and how much earning I made in July month and all the stuff. If I click on gigs, it would show my gigs. And the most important thing, it would show the impressions. What is an impression? When in the buyer section, we search for QuickBooks and our profile, like our gigs show up to the buyer.
That is called impression. So 33 impressions means in the last 30 days, I have received my gig is shown to 33 persons. Out of them, 4% has clicked. So the more the person clicks, the more chances are you get a order or get a job. So that's how gig works. So that's why creating an attractive gig is very important in it. So try to create as attractive gig as possible so that you can get a chance so your chances of getting an order increases. So this is the buyer side. You receive the messages, you can see your earnings, and dashboard, you can see your basic states and details and basic messages. So this is the seller side. Now in the upcoming videos, a lot more information I'll share with you regarding how to make gigs, कैसे gig बनानी है, कैसे आपको gig को rank कराना है. I'll show you all these details. So आप stay tuned रहिए till the new videos for the new videos. And if you like this video or if you have any query regarding to this video, you can leave a comment. If you like this video, you can give a thumbs up to the video. That would help the YouTube algorithm to suggest the video to the person who wants to watch this. And you can type in comment box in any query relating to freelancing for any platform, and I would be more than happy to reply to it. So till then, it was amazing support from you guys. So see you in my next video, which I've already uploaded in the YouTube. So you can check them out. Until then, bye bye. Have a great day. Take care.